स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 7 का लेसन नंबर 7 वेदर क्लाइमेट एंड अडेप्टेशंस ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट। इसका क्वेश्चन है हाउ इज द अडेप्टेशन ऑफ अ पेंगुइन इन पोलर रीजन इज डिफरेंट फ्रॉम द अडेप्टेशन ऑफ अ कैमल इन द डेजर्ट। आंसर The adaptation of a penguin in polar region is different from the adaptation of a camel in the desert in the following ways. Adaptation of penguin or adaptation of camel. First, penguins are covered with white fur that helps them merge with the snow. The camels have brown colored skin that helps them merge with the background. Second, they have feathers, thick skin and a lot of fat blubber under the skin. But camels, they can store food in the form of fat in their arms. Third, they have small ears that help them reduce heat losses. But camel, the absence of sweat glands prevents water loss. Fourth, they live in very cold regions, but camel live in hot deserts. Fifth, they are flightless bird and good swimmers. They have large and white feet for walking in sand. थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। पेंगुइन पोलर रीजन में रहते हैं और कैमल डेजर्ट में रहते हैं। दोनों डिफरेंट एरियाज में पाए जाते हैं। दोनों ने अपने आप को अपने वातावरण के अनुसार अडेप्ट कर लिया है। पेंगुइन वे बर्ड्स हैं जो उड़ नहीं सकते, वे गुड स्विमर होते हैं, वे कोल्ड रीजन में रहते हैं। उनके शरीर पर फेदर्स, थिक स्किन और स्किन के नीचे काफ़ी फैट होती है जो उनके शरीर को वेरी कोल्ड एटमॉस्फेयर में भी वार्म रखती है। कैमल हॉट डेजर्ट में रहते हैं। उनके फीट लार्ज और वाइट होते हैं जिससे वह सैंड में आसानी से चल पाते हैं। इनकी स्किन का रंग ब्राउन होता है जो बैकग्राउंड से मेल खाता है। वह अपना फूड फैट के रूप में हम्स में स्टोर कर लेते हैं। अभी आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। If you like our video, please share and subscribe our channel. Thank you.